Amit sir, given the sensitive nature of the subject that Pink is dealing with, the film needs to be shown in its entirety. Do you envisage any problems from the scissor-friendly CBFC? You already have a US certificate, I believe. We already have the trailer, so I think, no, I think they'll be glad to present this film for the country. So, UA certificate is what you're looking at? Yes, I mean, the trailer is what you saw, it's a UA, and that's what we want to aim for. And we are not here to sensationalize anything on the film. I never do that in all my films. Whether it's Vicky Donor, let me tell you, Vicky Donor was the most difficult film to get an UA than any other film. The kind of subject it dealt with. So we don't play with the gallery, and we don't want to titillate the audience by just doing things which are not right for the society. We never do that. In all my films, not been done. Not in this one also. Before the next question, may I just make a small submission? I want to tell you that as an actor that has been in the line for almost 45 years, what a great privilege it was for me to work with this wonderful star cast. Most of them are new faces. You perhaps have not seen them before. But I can tell you that when you see this film, you will not see me, you will only see them. It's an exceptional work that they have all done. And I say this from the bottom of my heart. I'm not being modest. I know that a lot of people call me a false modest person, but this is factual and this is the honest truth. I have never worked with such an exceptional cast as I have in this film. And they're all so new, they're all so committed. You cannot believe the kind of performances that they have given. You cannot believe that they're actually acting. They're just so natural, so good. And it's such an inspiration for me because I learn a lot from them. Andrea, I have Andrea, I have a question for you. I would really appreciate it, you know, if you did not ignore this star cast and spoke to them also. Yeah. Andrea, I have and a gave question. them a chance. Amit ji, hi. This is Sohail on your left sir. Yahan par. Congratulations to all of you all. You're looking very smart, dashing with this jacket. So yeah, definitely everything. First of all, this look के बारे में थोड़ा कहना चाहेंगे कि ये look how was it decided and lawyer का किरदार करना how difficult or easy it was like you know. जितना कुछ मुझे दिया जाता है करने के लिए, बोलने के लिए, पहनने के लिए, ये सब मैं अपने जो निर्देशक हैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ. सुजीत ने कहा कि इस तरह का लुक होना चाहिए, इस तरह के बाल होने चाहिए, इस तरह आपकी दाढ़ी बड़ी हुई होनी चाहिए और इस तरह के वस्त्र आप पहनेंगे. वो जो चेहरे पे मास्क है वो मेरा है और वो एक दिन क्योंकि मैं उसको लेकर के ट्रेनिंग कर रहा था तो सुजीत को अच्छा लगा. उन्होंने कहा इसको हम फिल्म में इस्तेमाल करेंगे. फिल्म में इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दिल्ली में एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी है, इसलिए ये मास्क लगा करके घूम रहा है. लेकिन बाकी जितनी चीज़ें थी, जितने भी औजार मुझको मिले इस फिल्म में, वो सब सुजीत की देन है. कुछ हद तक ये जो किरदार है ये थोड़ा सा क्या कहें, एक थोड़ा सा बहका हुआ है अपने जीवन में, कुछ हताश भी है, कुछ निराशाएं हुई हैं और इसलिए ये इतना सक्षम नहीं है अपने काम में. लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की वो परिस्थितियों को देखता है, ये इन 3 लड़कियों के घर के सामने ही रहता है और प्रतिदिन देखता रहता है इनकी जो हालत है या हालात हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर के ये कुछ कदम उठाता है जो शायद अपने जीवन में इसने पहली दफ़े इतना एक सशक्त कदम उठाया हो. और ये सारी बातें जो हैं ये सुजीत ने हमें समझाई. उसके बाद हम लोगों ने मिलजुल करके इसमें उस किरदार को बनाया, चाहे वो उसके कपड़े हों, चाहे उसका व्यवहार हो, वो किस तरह से बात करेगा, किस तरह से बोलेगा, तब जाकर के किरदार बना. सुजीत सर, अमित जी से एक सवाल है. सालों पहले आप दोनों ने एक फिल्म बनाई थी शू बाइट, वो अब तक रिलीज नहीं. क्या उसकी टीस अभी बाकी है कि वो रिलीज नहीं हो पाई है फिल्म? वो जूता अभी भी काट रहा है. सुजीत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई फिल्म रिलीज नहीं होती तो बहुत दुख होता है. सिंपल, आई मीन यू फील रियली बैड फॉर इट, बट वी हैव मूव्ड ऑन. वी आर मेकिंग फिल्म्स, वी स्टिल ट्राइंग दैट इफ समथिंग कैन हैपन, बट आई थिंक Piku or even Pink is all my repay back to Mr. Bachchan that we could not do and that film could not release.
सो ये सारी मेरी ऋण है जो मैं उनको वापस दे रहा हूँ सब. Amit ji, this side. Amit ji, yeah, during your youthhood days, you were tagged as the angry young man. Nonetheless, even today, I can see that effortless and prolific anger portrayed on the silver screen. How do you manage it? Yeah, the circumstances were such that I just couldn't control myself. No, seriously, it's not really a laughing matter. It's when you see the circumstances in the film, you will realize that any other actor, I mean, Sujit could have taken anybody else. I'm very grateful that he included me in the cast, but anyone would behave the way that he did. हालांकि आपने घुमा फिरा दिया अपना कैरेक्टर, लेकिन दिन में शहंशाह लग रहे हो और रात में लॉयर लग रहे हो, तो थोड़ा सा एलैबोरेट. अच्छा, दिन में लॉयर और रात में शहंशाह, उल्टा बोल गई मैं. थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा. बहुत से और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे आप बात करें. तापसी, my next question is to you. क्यूट तापसी, बबली तापसी, हमने यही तापसी देखी और इसी तापसी से मिले हैं. बट अभी जो हमने ट्रेलर दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया, and it's going to be on YouTube in a couple of minutes. इस पिंक में क्या हमें नजर आने वाला है? I think क्यूट तापसी, बबली तापसी फर्स्ट फिल्म के बाद रह गई थी पीछे. After that I did Baby and now this. I don't think people see me as cute बबली anymore. हाँ, अब मैंने इसके अंदर ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे हैं for a change. But Pink, I think it is very close to a Delhi girl, like Shuri sir said. कि मतलब बहुत easy और difficult at the same time ये थी पिक्चर. easy इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ, वहीं पे रही हूँ यहाँ आने से पहले, तो इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता था कुछ करना मेरे लिए. मुश्किल इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था, it has actually taken a piece out of my heart and it's always going to be there. Like this will be a landmark for me in all possible ways. The fact that so early in my career I got to share screen space with him. Like हाँ, हम एक दूसरे के अगेंस्ट से खड़े थे ऐसा लग रहा था ट्रेलर में. But what fun to work with him, and my sweetheart's almost here right now. I think we three bonded the best during the film shoot. Like we really were like flatmates. And Chijita, thank you so much. Finally, आपने मुझे अपनी पिक्चर के अंदर कास्ट करके. Thank you so much. I mean, it is almost a pleasure to work under him. Like he gets the best out of you, Tony Da. What an entry in Bollywood! So thank you so much. Pink is this how it has happened. Thank you guys. You've been not so nice to me on the on the screen, but very nice to me off screen. Thank you so much. Every fan wants to have a picture click with their favorite stars from the world of sports entertainment. And so was the case with Bollywood diva Sunny Leone. The actress recently met the great Khali in a flight and couldn't resist clicking a picture with the former WWE star. Later,